Okay, Assalamu alaikum. So yesterday we were talking about water and we discussed the properties of water. And the two properties that we talked about water were that water is an excellent solvent for polar and ionic molecules. Why? Because water itself is a polar molecule, which means that it has partial charges. And because of those partial charges, there is a polarity in water molecule. And due to that, it can attract other water molecules to itself. And it can also attract ionic compounds as well as polar compounds. Another property of water that we discussed was that it has high specific heat capacity. Now, specific heat capacity is basically the amount of heat energy required to raise the temperature of water of 1 gram or 1 kilogram of water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Now, we said that because water has a high specific heat capacity, which is actually 4.8 joules, water needs a lot of thermal energy to raise its temperature, and therefore, a narrow or a slight change in the environment's temperature would not affect the temperature of our body because our body is basically majorly made up of water. 65 or 60% of our body is what? It's water. So, because of an environmental change, because of a temperature change in our surrounding, our body temperature would not be affected. Why? Because a lot of heat energy is required to raise the temperature of water. So, henceforth, our body's temperature would not be raised. So, the two benefits of having high specific heat capacity is that it ensures that the human body temperature remains within narrow limits. And why is it important? It is important so that the enzyme activity, because we know that enzymes are globular proteins and they are sensitive to pH and temperature changes. Therefore, it is important that our body temperature remains within fixed and narrow range. So, because of water's high specific heat capacity, the human body temperature remains within narrow limits. It ensures that our enzyme activity is not hindered and they're working at their optimum best temperature. Subsequently, because water makes up a large habitat for our aquatic life, large water bodies, their temperature is not changed because of the surrounding, and the temperature of the water bodies of the water environment remains within narrow limits, and henceforth the enzymatic activity of aquatic life is not disturbed. Now, moving on to other characteristics or other properties of water, water has a high latent heat of vaporization. Now, can you tell me what is latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization. Let me write heat over here. What is latent heat of vaporization? Can you recall that? Latent heat of vaporization is basically your measure of heat energy. Yes. Yes. And is there any temperature change or does that occur at a constant temperature? Yes, it needs heat, but when that change is occurring, when that heat is being absorbed, for example, we have water and we have liquid water basically, and it turns to steam, which is a gas. So does the vaporization of water occur at a fixed temperature, and is that temperature constant, or is there a range of temperature over which this process takes place? That is my question. Does vaporization occur at, yes, it occurs at 100 degrees. And what happens is कि जब तक सारे water molecules लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, हमारे पास वेपराइजेशन या बॉइलिंग का प्रोसेस होता रहता है एंड हमारे पास उस वक्त कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता. So over here, when we were talking about specific heat capacity, what was happening was that there was a change in temperature. हमारे पास कुछ ना कुछ delta Q था. Because हमारे पास, if you talk about the equation, that is basically energy, that is your, so it's basically Q equals to MC delta T, which is, this is your Q, which is the energy absorbed or the energy required to raise the temperature. This is the mass of the substance. This is your specific heat capacity. And this is your
change in temperature. So there is a change in temperature which is occurring during specific heat capacity or when we are raising the temperature of a substance. But when we talk about vaporization or when we talk about a fusion, when solid to liquid change occurs, that is fusion basically. And vaporization is what? When liquid to gas change occurs. So whenever vaporization or fusion occurs, it occurs at a fixed temperature और जब तक सारे molecules का state change नहीं हो जाता, जैसे कि in this case liquid से जब तक सारे मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाते our temperature is constant, and in the case of water it is what? It is 100 degrees. Okay, so your latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to vaporize a liquid at constant temperature. Now, in O levels, you would have studied the chapter of homeostasis. So, in homeostasis, what you learn is दैट सबसे पहले तो हमारे पास हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी हीट कैसे प्रोड्यूस करती है? हमारे पास जब रेस्पिरेशन होती है, टिश्यू रेस्पिरेशन से जो रेस्पिरेशन होती है, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एज आवर बाय प्रोडक्ट्स और आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट? अगर अच्छा ये हमारे पास हीट नेसेसरी होती है टू कीप अस वार्म, बट कभी कभार ये हीट बहुत ज्यादा हो जाती है एंड वी हैव टू रिलीज दिस हीट. For example, in summers we sweat a lot, right? What is sweating? Sweating हम कहते हैं कि गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है. So what is the science behind it? What happens is कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट accumulate हो जाती है, ठीक है? ये हमारे पास हमारी स्किन है, ठीक है? एंड स्किन के नीचे we have our blood vessels, okay? So हमारे पास ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं. These are our blood vessels. So what happens is कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है? वो हमारे बॉडी सेल्स में हो रही होती है और हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनकी बहुत पास में क्या गुजर रही होती है? हमारी कैपिलरीज गुजर रही होती हैं, ठीक है? हमारे पास जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारे सेल्स से इन कैपिलरीज में जाती हैं और कैपिलरीज के थ्रू ये वेन्स में जाती हैं, राइट? अब हमारे पास हमारे स्किन के नीचे वेन्स होती हैं. These veins basically bring that deoxygenated blood which has heat, which has like heat present inside it, और वो कहाँ पे लेकर आता है? वो स्किन की सरफेस पर लेकर आ जाती है. और फिर स्किन की सरफेस पे क्या हो रहा होता है? हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. These are our three methods of heat transfer. तो हमारे पास इन तीन methods of heat transfer के थ्रू क्या हो रहा होता है? हमारी हीट हमारी स्किन के सर्फेस के थ्रू एस्केप कर रही होती है. ना हमारे पास जो हमारे बॉडी का मेजोरिटी कंटेंट है वो क्या है? वो मेजोरिटी कंटेंट हमारा वाटर है. सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास वाटर को लिक्विड से हमारे पास क्या होता है? हमारा जो वाटर है वो इन फॉर्म ऑफ स्वेट हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट, हमारी स्किन पे अक्यूमुलेट हो रहा होता है, राइट? एंड हमारे पास होता है क्या? स्वेट. क्या होता है? स्वेट इज बेसिकली लिक्विड, राइट? हमारे पास जब ये स्वेट हमारी स्किन पे अक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ से हमारे पास हीट आ रही है, तो हमारे पास दिस इज वाटर, बेसिकली वाटर होता है और सॉल्ट्स होते हैं इसमें. So what happens is that our heat energy from our body, it's coming to the surface of the skin, okay? And what happens is that a lot of heat is required to convert this liquid sweat into vapor and for it to vaporize and leave our skin. तो इससे होता क्या है? हमारे पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी यूज हो जाती है टू कन्वर्ट दिस स्वेट इनटू लिक्विड. तो होता क्या है? दैट मैक्सिमम और large amount of heat from the body is used to evaporate or vaporize
minimum amount of water from the surface of the skin. Now, what do I mean by this? हमारे पास water की high latent heat of vaporization है. High latent of heat of vaporization का मतलब that water requires more or large amount of heat energy to convert into vapors. Correct? तो हमारे पास हमें बॉडी से बहुत ज्यादा हीट रिलीज करनी है, लेकिन हमें हीट रिलीज जरूर करनी है अपनी बॉडी से, लेकिन हमें एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं करवाना. सो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर से जो फायदा हमें, एडवांटेज हमें है, वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन कन्वर्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्वेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडीज वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर. तो हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारी बहुत ज्यादा हीट भी बॉडी से रिलीज हो रही है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे, वो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ना कर जाए हीट अक्यूमुलेशन की वजह से. तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमारी यूज हो जाती है, रिलीज हो जाती है बॉडी से. एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि बिकॉज बहुत ज्यादा हीट यूटिलाइज हो रही होती है लिक्विड स्वेट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास होता क्या है कि मिनिमम वाटर लॉस होता है और मैक्सिमम हीट लॉस हो जाता है. सो हम डिहाइड्रेटेड, तो अगर हम सर्दियों में, हम गर्मियों में क्यों कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ताकि आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से आपको बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा होता है फ्रॉम योर बॉडी, राइट? So to compensate for that water loss, we drink a lot of water in summers. ठीक है. अच्छा, दूसरी क्या चीज होती है, हमारे पास जब भी ये स्वेट हमारा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन वेपराइज कर जाता है, लीव कर जाता है, तो हुआ क्या, ये जब लीव किया, ये ऐसे ही तो कहीं गायब नहीं हो गया मैजिक से, इसको हमने कन्वर्ट किया है बॉडी हीट के थ्रू इनटू व्हाट, इनटू वेपर. बॉडी हीट, बहुत ज्यादा बॉडी हीट हमने यूटिलाइज की इनटू कन्वर्टिंग दिस स्वेट लिक्विड इनटू व्हाट, इनटू वेपर. तो हमारे पास हीट रिलीज हुई, स्वेट इवेपोरेट किया, तो एज अ रिजल्ट वेपराइजेशन ऑफ स्वेट से क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है. क्यों कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 100 ml ऑफ वाटर इन दिस बीकर. 100 ml ऑफ वाटर को मैंने बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की, ठीक है, आई प्रोवाइडेड इट विद हीट, एंड एज अ रिजल्ट मेरे पास वाटर ने हीट एब्जॉर्ब तो कर ली वो सारी, लेकिन क्योंकि वाटर का इतना हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो खाली 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर इवेपोरेट करता है. तो जब वो इवेपोरेशन होती है, तो मेरे पास 98 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर बचता है. मेरा कोई बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं हुआ, लेकिन ये जो 2 मिलीलीटर वाटर इवेपोरेट हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो गई, और वो इनके साथ लीव कर गई, इन वेपर्स के साथ. और जो रिमेनिंग 98 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है ना, वो कूल डाउन हो गया. वो कूल डाउन क्यों हुआ? मैंने क्या उसको फ्रिज में रखा? नहीं. इस 2 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर ने जो इवेपोरेट हो गया, उसने उसको, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने साथ वो उस हीट को ले गया. सो हमारे पास स्वेटिंग का एक फायदा जो ऑर्गेनिजम्स को होता है, वो ये होता है कि गर्मी में उनको एक कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है. क्यों? क्योंकि जो वेपर्स हमारे स्वेट के साथ, स्वेट हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होकर जब बॉडी से लीव करता है, तो वो अपने साथ, उसने क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की भी होती है, तो ना सिर्फ हम स्वेट रिलीज कर रहे होते हैं, बल्कि साथ साथ हमारे पास हमारा हीट लॉस भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? अच्छा, अब सब्सिक्वेंटली हमारे पास ये हो क्यों रहा है, हमारे पास इतनी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों है? एनी सजेशंस? द आइडिया इज एप्स, or the reason is ditto same as high specific heat capacity. Why do you think water requires so much of heat energy to convert into a gas or into a vapor? Very good. So basically, water has what? Water has hydrogen bonds. So we require a lot of energy to overcome those hydrogen bonds. So high latent heat of vaporization, specific heat capacity, and water's ability to act as an excellent solvent, all are because of hydrogen bonds. Now, there are a few other properties which are not very important, but I just quickly want to go over them. One of them is cohesion. ठीक है? Then we have adhesion.
And then there's one property which has nothing to do with water. Water is hydrogen bond, but it is a very unique thing that water has, जिसको हम anomalous expansion या फिर maximum density of water at 4 degrees Celsius कहते हैं. And we'll go over them one by one. Now, what is cohesion? Cohesion is the tendency of water molecules to attract each other. और यू कैन से वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं. एंड वो हमने बिल्कुल अंडरस्टैंड रिपीटेडली किया है दैट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं. यानी एवरी हाइड्रोजन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन ऑफ द अदर वाटर मॉलिक्यूल एंड एवरी ऑक्सीजन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोजन ऑफ द अदर वाटर मॉलिक्यूल. तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव होते हैं. उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं. व्हाई? Because of hydrogen bonding की वजह से oxygen of one molecule is attracted to hydrogen of the other molecule and vice versa. Secondly, हमारे पास adhesion. Now, adhesion is the tendency of water molecules to attract to the surface. For example, मेरे पास अगर एक glass है, if I have a glass, तो मेरे पास जब मैं इसमें water add करूंगी, तो मेरा जो वाटर है इट वुड स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास, राइट? कभी आपने देखा है कि जो वाटर है और जो ग्लास की बाउंड्री उसमें कोई सेपरेशन हो? हमारा कोई भी वेसल हो, वाटर उसको बिल्कुल कंप्लीटली फिल कर देता है. कोई गैप नहीं होता, कोई क्या कहते हैं पार्टीशन नहीं होता. वो सारी जो वॉल्स ऑफ द सर्फेस है उससे अट्रैक्ट कर जाता है. सिमिलरली इफ यू थिंक ऑफ जाइलम वेसल हमारे पास वो वेसल होती है प्लांट्स में जिसके थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपटेक होता है. वो रूट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जा रहे होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रीज में जा रहे होते हैं. तो हमारे पास जो जाइलम, दिस इज अ जाइलम वेसल, तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली इस तरह से, जो बाउंड्री है ये जाइलम की बाउंड्री है ना बेसिकली, उससे इस तरह से दे आर स्टिकिंग टू द जाइलम वेसल. आई विल राइट दिस डाउन. दिस इज योर जाइलम वेसल. ये उसकी बाउंड्री है, ठीक है? और उसकी बाउंड्री से हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? दे आर क्लोजली स्टिकिंग टू इट, राइट? दे हैव अ टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड टू द वॉल्स ऑफ द सरफेस. ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एडिशन. जब आप दूसरी सरफेसेस से वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हो. एंड ओवर हियर इफ यू कुड नोटिस, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं. ये प्रॉपर्टी क्या है? जब वाटर एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो रहा होता है, ये हमारे पास होती है कोहेजन. और ये दोनों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना वाटर की, कोहेजन एंड एडिशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो ये जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का चैप्टर करेंगे तो वहां पर इसको ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, नाउ द लास्ट थिंग about water is, and then we will finish this chapter, that is maximum density of water at 4 degrees Celsius. Acha. Okay. So for example, I have water. I have a puddle of water over here. ठीक है, ये मेरे पास एक water का pool है. Now, if initially इसका जो temperature है वो है मेरे पास 50 degrees Celsius and final temperature मेरे पास अगर है for example 20 degrees Celsius. So from 50 degrees Celsius, we went to 20 degrees Celsius. Can you tell me, did I cool my water or did I heat it up? Is this showing you cooling or is this showing you heating? This temperature change. Yes, there's a difference of minus 30. So is it cooling or is it heating? Very good.
तो हमारे पास जब कूलिंग होती है तो हमारे पास when we are cooling water molecules, right, इसमें बहुत सारे water molecules present होंगे, करेक्ट। तो हमारे पास जब कूलिंग होती है यानी हीट लॉस हो रहा है वाटर में से, तो हमारे पास water molecules come close to one another or they move away from one another. As a result of cooling, do the water molecules expand, move away from each other, or they come closer to one another? Let me twist this question and make it easier. When I'm heating something, these are my molecules. Okay? If I'm providing them with heat, what happens is that they absorb heat energy, right? And when they absorb heat energy, their kinetic energy increases and they start to vibrate more quickly and more frequently. ठीक है। एंड उसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से इनका दे मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, ये लोग वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से they start to move away from one another and heating causes expansion. यानी अगर मेरे पास वाटर है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ बॉइलिंग वाटर, आप देखते हो कि आप जब वाटर को बॉईल करते हो और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके जो बबल्स होते हैं वो आपस में, how do I, they're like kind of jumping and there is a very chaotic environment within the pot which you are heating the water, right? So whenever you heat anything and specifically liquid, you can observe it very easily that the kinetic energy of the system is increasing. The molecules are vibrating fast, and due to that, they want to, there's a lot of energy. For example, let's take an example of two children. We have one child which is very calm, sitting in a quiet corner, and then there's another child who is very energetic. तो वो जो एनर्जेटिक चाइल्ड है वो इधर उधर हर जगह भाग रहा होगा, शरारतें कर रहा होगा, और जो हमारे पास काम एंड क्वाइट चाइल्ड है वो कोने में एक जगह कामली बैठा हुआ होगा. So the child, which is very energetic, it is running everywhere. It needs a lot of space, right? So imagine when you are giving heat energy to any molecule, you're increasing the system's overall energy. वो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है सिस्टम में. एंड जिस तरह उस बच्चे को भागने दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए थी, इन मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं. सो व्हेन आई एम हीटिंग माय मॉलिक्यूल्स आर एक्सपैंडिंग, राइट? और अगर कोई चीज एक्सपैंड कर रही है तो वो पहले अगर इतनी थी तो वो एक्सपैंड करके इतनी हो जाएगी, करेक्ट? So I can say that when expansion occurs, my overall volume of the system increases. Am I correct? Are you with me till here? Or is there any question? You can pause me and ask. Okay. So I can say that whenever I'm heating a substance, it is expanding, right? And when it's expanding, its volume is increasing. Correct? तो इसी का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास कूलिंग में? When you are cooling, you are basically taking away the heat energy from the system. अब heat energy आप lose कर रहे हो. The molecule, the system is losing its heat. तो जब आप उसकी heat energy निकाल रहे हो तो आप उस system में से energy निकाल रहे हो. जब आप उस system में से energy निकाल लोगे तो उसकी जितनी भी energy use हो रही थी movement में, वो energy कम हो जाएगी. तो वो जो particles हैं वो less frequently और less energy के साथ vibrate करेंगे. तो वो फिर वो naughty kid से वो एक काम kid में convert हो जाएंगे जो एक जगह पे आराम से बैठा हुआ है. So for that kid does not require a lot of space, correct? तो होगा क्या कि हमारे पास कूलिंग में क्या होता है कि हमारे पास opposite of expansion हो जाता है. Our water molecules start to they come close to one another. ठीक है? तो हमारे पास जब वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास expansion नहीं होगी. Instead हमारे पास जो ओवरऑल वो है, क्या कहते हैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आवर सिस्टम डिक्रीजेस. ना हमारा डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है? तो हमारे पास जब मास कांस्टेंट है एंड इन दिस केस हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा नहीं कर रहे.
हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट है, जो उनका मास है, जो उनकी क्या कहते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम में प्रेजेंट है, वी आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देम, दे आर कांस्टेंट। हाउएवर वी आर प्रोवाइडिंग और टेकिंग अवे एनर्जी फ्रॉम देम, जिसकी वजह से या तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जैसे कि हीटिंग में इंक्रीज करता है, और कूलिंग में हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। सो व्हेन माय मास इज कांस्टेंट, I can say that density and volume has an inverse relationship, correct? So what happens is that, for example, let's draw a graph. On my y-axis, I have density, and on my x-axis, I have my temperature in degrees Celsius. Now this is 100 degrees Celsius, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Now, हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे इट इज व्हाट, इट इज गैस, और हमें पता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो बहुत दूर दूर होती है, राइट? गैस में हमारे पास पार्टिकल्स आर फारदेस्ट अवे फ्रॉम वन अनदर। अब अगर हम उसको कूल करना शुरू करें, मैं 100 से 90 आऊं, फिर 90 से 80, देन 70, देन 60, सो व्हेन आई एम कूलिंग माय वाटर मॉलिक्यूल्स, वो पहले गैस थे एट 100 डिग्री सेल्सियस, दे आर गैस, राइट? When I'm cooling them, they're slowly coming closer to one another. And if they're coming closer to one another upon cooling, now tell me, when I'm decreasing my temperature, ठीक है, temperature lose हो रहा है water molecules में से, they're coming closer to one another. तो मैं cool कर रही हूँ, तो मेरे पास cooling में volume increase होगा कि मेरे पास volume decrease होगा? Exactly. So my volume decreases. ठीक है. Now, if my volume is decreasing, what is happening to my density? Would my density increase or would my density decrease? Very good. So my density is increasing. When volume is decreasing, my density increases. Now, when I'm going from 100 to 90, then I'm going to 10, my density is what? It is increasing. Why? Because मैं यूं जा रही हूँ और मेरे पास क्या हो रही है? Cooling हो रही है. So my density is increasing. Now, when I reach 4 degrees Celsius, for example, this is my 4 degrees Celsius mark. This is my 4 degrees Celsius, okay? My density is maximum where? At 4 degrees Celsius. ठीक है? Okay. Just a second. एंड व्हाट हैपेंस इज कि अब तक मेरे पास क्या हो रहा था, मेरे पास मेरा वाटर जो है इट वाज कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, द वाटर मॉलिक्यूल्स वर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो हमारे पास ओवरऑल एक्सपेंशन नहीं हो रही थी। अब अगर इफ आई कंटिन्यू माई कूलिंग, मेरे पास नॉर्मली क्या होना चाहिए कि मेरा वाटर की वॉल्यूम डिक्रीज करे और मेरे पास जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करे, बट वाटर हैज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी कि इस पॉइंट तक 4 डिग्री सेल्सियस तक मेरा वाटर कूलिंग पर एक्सपैंड नहीं कर रहा होता, इंस्टेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इट इज अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन में, वाटर मॉलिक्यूल्स आर कमिंग closer to one another, the volume is decreasing and therefore the density is increasing. However, at 4 degrees Celsius, water की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी की वैल्यू है वो कहाँ तक आती है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आती है। And after 4 degrees Celsius, our water molecules, upon cooling, instead of getting closer, they start to expand. At 4 degrees Celsius, water molecules expand. Now, when they are expanding, our volume increases. So, if our volume is increasing, so what would happen to our density? If my volume at 4 degrees Celsius is after 4 degrees Celsius, sorry, not at 4 degrees Celsius, after 4 degrees Celsius, my water molecules begin to expand. When expansion occurs, the volume of the system increases.
So if my volume is increasing, my density and volume are related inversely. So if volume increases, what is happening to my density? So from 4 degrees Celsius, my value of density starts to decrease. Now, this is an abnormal behavior. Why? Because even after कूलिंग हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस की बात भी हो रही है, लॉस ऑफ टेम्परेचर हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस के सॉरी डिक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी हो रहा है, बट हमारे पास वो जो लॉस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, जो कूलिंग हो रही है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन के बजाय डिक्रीज इन वॉल्यूम के बजाय हमारे पास जो वाटर है वो एबनॉर्मली एक्सपैंड कर रहा होता है, और इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। इट हैज टू डू विद हाउ वाटर अरेंजेस इटसेल्फ इन एन आइस क्यूब, और व्हेन इट इज फ्रीजिंग वो अपनी सॉलिड फॉर्म में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से होती है, अपना स्ट्रक्चर कैसे सॉलिड फॉर्म में बिल्ड कर रहा होता है जब वो फ्रीज करता है, इट हैज टू डू विद दैट. This behavior of water is the only property of water which is not because of hydrogen bonds. And this is known as the anomalous expansion of water. एक abnormal behavior है, and it is only unique to which substance? It is only unique to water. So any questions about it? So this is known as anomalous. Anomalous का मतलब basically होता है abnormal expansion of water. So that brings us to the end of biological molecules. Anything about the topic that you want me to go over or discuss? Or is it clear so far?